we find that India is a secular country. This is also a secular country. This is also a secular country. And America is also a secular country. America is also a secular country. But the nature of society is a little bit different. Nature of society, ठीक है, is a little bit different. Here the nature of society is a little bit different. And in order to explore this nature of society, we will have to enter into the history. History में enter करना पड़ेगा. यहाँ nature of society क्या है? If we talk about Hinduism, so there is Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra. Shudras were untouchable class. शूद्र क्या थे? Untouchable class था. And they were exploited for thousands of years. They were exploited for thousands of years. है कि नहीं? बताओ, exploited for thousands of years. तो एक प्रॉब्लम तो यही है. अदर प्रॉब्लम क्या है? There are other groups also, like Buddhist, like Jain, other groups also. The other group also came, Muslims came here. Clear? There are many other religions. Parsis bhi. So there are many other religions. Now when you look at all these religions, this society, Indian society, is having diversity. Indian society में क्या है? Diversity. Vast diversity. And this society is, obviously, in this society, the majority population is what? Hindu population. The majority population क्या है? It is Hindu population. ठीक है? Now, we see that the presence of different kind of societies here, religions and caste, presented some complex political scenario. And this complex political scenario is seen in Indian national movement. ये कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल सिनेरियो कहाँ देखने को मिलता है? इंडियन नेशनल मूवमेंट. कैसे देखने को मिलता है? अभी मैंने आप लोगों को इंडियन नेशनल मूवमेंट नहीं पढ़ाया, बट आप रिलेट कर पाओगे. क्या कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है? फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग. मुस्लिम लीग फर्स्ट फॉट फॉर सेपरेट इलेक्टेड सिस्टम. आगे चल के मुस्लिम लीग के जो लीडर है जिन्नात, ही केम विथ एन आइडिया ऑफ टू नेशन थ्योरी. कहा हिंदू एंड मुस्लिम आर okay, not only two different religions, they are two different nationalities, they cannot coexist together. दोनों साथ साथ रह ही नहीं सकते. And he demanded for a separate nation, Pakistan. It means in the history, in our freedom struggle, what is one of the most dominating aspect? एक dominating aspect सबसे ज्यादा क्या है? That different groups were fighting to get relaxations, political relaxations. Even one group was fighting for a separate nation, Pakistan, and these all claims were based on the religion or the minority status. Dalit separate electorate, Ambedkar demanded it in round table conference. तो इंडिया का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है. गॉट इट? देयर वर डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिकल डिमांड्स, राइट? Now in this secularism, after independence, our independence comes at the cost of partition. ठीक है? And at the time of independence there were more than 550 princely states जिनको हमें एकोमोडेट करना था. अमेरिका की तरह केवल 13 कॉलोनीज नहीं थे. देयर वाज ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स. उन सबको क्या करना था? इंटीग्रेट करना था. मोर देन 560 स्टेट्स. So at that time what our constitution will do? हमारे पास ऑप्शन क्या है? Our secular aspect will be more strict or it will be liberal. Do you think that we will promise to protect religious freedom of the minorities? Yes or no? Yes. So in Indian constitution, the nature of secularism is what? It is a kind of more interventionist secularism. Right? This in India, the nature of secularism is what? It is more interventionist. Like this. इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी? More interventionist. More interventionist secularism. And why we are calling it more interventionist secularism? Read this. Because, right? Because, read this. Intervention of government. Intervention of government. Intervention of government. Okay. Intervention of government.
right? Positive secularism or principled distant approach will be followed. Positive secularism, positive secularism plus principled, principled distant, distance approach will be followed. प्रिंसिपल डिस्टेंस अप्रोच का मतलब ये है कि स्टेट सभी रिलीजन से दूरी बना के रखेगा, लेकिन जहां जरूरत होगी किसी रिलीजियस ग्रुप को प्रोटेक्ट करने की, प्रमोट करने की, स्पेशल सेफगार्ड देने की, तो स्टेट वो काम करेगा। प्रिंसिपल डिस्टेंस अप्रोच आप लोगों के मम्मी पापा यही करते हैं जब दिल्ली में तैयारी करते हैं। प्रिंसिपल डिस्टेंस अप्रोच आपको अकेले तैयारी करने के लिए छोड़ दिया, बीच बीच में पता लगाते रहते हैं क्या चल रहा है। जब जरूरत होगी तो इंटरवीन करेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट दे विल नॉट इंटरवीन, दे विल इंटरवीन व्हेन इट विल बी नीडेड। दैट इज प्रिंसिपल डिस्टेंस अप्रोच। क्लियर? बताओ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में दिखता है? आर्टिकल 25 टू 28, आर्टिकल 29, आर्टिकल 20, आर्टिकल 30, यही तो है प्रिंसिपल डिस्टेंस अप्रोच। राइट दिस आर्टिकल 25 टू 28 ही दिखता है। Article 29 में we see this, Article 30 we see this, we see all this. Clear? In different articles here. Okay. It means the state is the state maintaining strict neutrality here. क्या state strict neutrality maintain कर रहा है? No. The state is not maintaining strict neutrality. The state is not maintaining strict neutrality. Because state cannot maintain, कर ही नहीं सकते आप. State is not maintaining strict neutrality. Clear? स्टेट स्ट्रिक्ट न्यूट्रलिटी नहीं मेंटेन कर रहा, वो आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको आजादी के समय माइनॉरिटीज को इस बात के लिए आश्वस्त करना था, इफ यू आर अ डेमोक्रेटिक नेशन, दैट इन इंडिया माइनॉरिटीज राइट्स विल बी प्रोटेक्टेड, दे विल बी गिवन सेफगार्ड, माइनॉरिटीज विल बी गिवन सेफगार्ड, दे विल बी गिवन प्रोटेक्शन, स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म लाना पड़ेगा आपको। दैट्स व्हाई यू कैन नॉट मेंटेन strict neutrality, आप नहीं मेंटेन कर सकते। तो राइट दिस पॉइंट। ओके, इट इज बिकॉज, ओके, इट इज बिकॉज द स्टेट प्रोमिस्ड, नेहरू रिपोर्ट में भी हमने प्रॉमिस किया था 1928, इट इज बिकॉज द स्टेट प्रोमिस्ड टू प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड the rights of religious and linguistic minorities in India. The state promised to protect and safeguard the rights of religious and linguistic minorities in India. Clear? Linguistic minorities in India. Example. Example like management of religious properties by the state. Waqf board. Management of religious properties by the state. Right, next point. Abolition of untouchability. यहाँ पे भी स्टेट क्या कर रहा है? इंटरवेंशन कर रहा है. So the state is having a more interventionist approach. The state is having more interventionist approach. Got it? This is one point, one idea. Now, when we come here, nature of society in America. So America was previously a virgin territory. Different European groups came and settled. सब आके settle हो गए. So basically it is a country of immigrants. ये immigrants country है. Different group of people came and settled here. And when they settled, what were the three main expectations? जब वो सेटल हुए तो उनकी थ्री मेन एक्सपेक्टेशंस क्या थी? आई हैव रिसेंटली डिस्कस्ड विद यू. वन वाज व्हाट? इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी. द सेकंड वाज ओके लिबर्टी, पॉलिटिकल फ्रीडम, एंड द थर्ड वाज रिलीजियस फ्रीडम. ये थ्री मेन एक्सपेक्टेशंस थे. सो इट वाज अंडर ब्रिटिश रूल. तो व्हेन ब्रिटिश रूल एंडेड, ओके, तो इकोनॉमी भी तो सब्जुगेट होती है. इफ इट वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी, इट मींस इट्स इकोनॉमी वाज सब्जुगेटेड अंडर ब्रिटिश कंट्री. So when it became free, these two aspirations fulfilled. And now, in order to maintain religious freedom, what America will do? Read this. America will introduce a model of secularism, which will be based on strict neutrality. America will develop a model of secularism that is based on
strict neutrality. It was based on strict neutrality. Strict neutrality का मतलब क्या है? The state will follow a strict policy to avoid favoring any religion. Right this? The state will follow a strict policy. The state will follow. The state will follow a strict policy. The state will follow a strict policy to avoid favoring any religion. The state will follow a strict policy to avoid favoring any religion. It means the state here is more interventionist or less interventionist. It is less interventionist, right? This less interventionist in the matters of religion. Less interventionist in the matters of religion. Less interventionist in the matters of religion. और ऐसा होने के पीछे एक रीजन है, और वो रीजन क्या है? 13 कॉलोनीज जब इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए लड़ रहे थे तो हमारी तरह नहीं लड़ रहे थे कि भैया हमें सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम दे दो, हमें पाकिस्तान दे दो, हमें हिंदुस्तान दे दो. ये नहीं चल रहा था वहां. गॉट इट? दिस प्रॉब्लम वाज नॉट देयर. पहली चीज. एंड सेकंड पॉइंट इज व्हाट? सेकंड पॉइंट इज दैट different European groups who came and settled here all are predominantly Christians. सब पहले से ही क्रिश्चियन है. मेरी बात समझ गए? है तो क्रिश्चियन ही है. ठीक है. तो क्रिश्चियनिटी वाज प्रीडोमिनेंट हियर. ओके, सो दे वर प्रीडोमिनेंटली क्रिश्चियन. प्रीडोमिनेंटली क्रिश्चियन. दूसरी चीज क्या है? जो भी इमाइग्रेंट्स बाहर से आएंगे इस कंट्री में, उनका विशेष ध्यान रखा जाएगा. उनके लिए लिबरल राइट्स होंगे. वाई? बिकॉज दिस कंट्री इज अ कंट्री ऑफ इमाइग्रेंट्स. मेरी बात समझ गया ना? सो देयर आर लिबरल राइट्स फॉर द इमाइग्रेंट्स हु आर कमिंग टू दिस कंट्री. सो दिस ऑल लाइज इन द हिस्ट्री ऑफ द अमेरिका. दैट डिफरेंट यूरोपियन ग्रुप्स केम एंड सेटल्ड. इंग्लिश आए, फ्रेंच आए, पोर्टुगीज आए, डच आए, अफ्रीकन को गुलाम बना के लाए. राइट? They came and settled here. And majority of the people who came and settled in America, about 2/3 of the immigrants were the British people. ये सबसे important बात है कि America was a settlers colony. America was a settlers colony. People from different parts of Europe came and settled here, but the majority of the settlers, that is 2/3 of the settlers, 2/3 of the settlers were British immigrants. 2/3 of the settlers were the British immigrants. 2/3 of the settlers were the British immigrants. ये बात समझ गया ना? अच्छा बताओ, जैसे इंडिया में हुआ था, पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश एंड फ्रेंच, दे केम इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर. सब आपस में लड़े कि नहीं? फर्स्ट कॉमर्शियल राइवलरी, देन कॉलोनियल राइवलरी, and finally who became political power? Company. India became a colony of Britain. The same happened here also. America में भी यही हुआ. There were Spanish, Portuguese, Dutch, English, French. Majority of the people are English origin. English origin. They came in conflict with each other. So what we see here? Okay, commercial rivalry. What we see here? Colonial rivalry. Commercial rivalry and colonial rivalry. What do we see here? Commercial rivalry and colonial rivalry. हम इसी को देखते हैं, commercial rivalry और colonial rivalry. Got it? Finally, there are two main rivals here. This is English and French. The same like in India. India में जो हुआ था वैसे ही है. English and French were the two main rivals. English and French were the two main rivals. ये सबसे दो main rival थे. English and French. And finally, who was successful in developing these colonies at the British colonies? So British in developing this as a colony, right? This in this colonial conflict, English emerged victorious. English emerged victorious. Okay. So these were the two main claimants of power. These two groups were the two main claimants of power. And finally, who became victorious? So English became victorious. And in this way, these 13 colonies became British colonies. These 13 colonies became British colonies. Got it? Okay. Germans, Swiss, Scottish,
Irish people, they also went to America. ये भी क्या है? You can write here. Germans, Swiss, Germans, Swiss, Scottish people, Scottish people, Irish people, Irish people, they also went to America. So this is a country of what? Immigrants. ये कैसी कंट्री हो गई? Immigrants की कंट्री. अब कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं. लेट्स डिस्कस अ फ्यू मोर कॉन्सेप्ट्स हियर. बोर तो नहीं हो रहे हो आप लोग? ठीक है. पूरी हिस्ट्री समझते समझते, स्टोरी के फॉर्म में समझते समझते, अ टाइम विल कम व्हेन यू विल बी एबल टू राइट द आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन. बट फॉर दैट यू नीड टू नो द स्टोरी इन डिटेल. कहीं से कोई ऐसी चीज ना हो जो समझ में ना आए. नाउ अब कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता रहा हूँ, राइट? एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नो. नाउ what is the basic thing here? Now on one side here we are looking at America. On one side we are talking about America. और वहीं अटलांटिक के दूसरी साइड अगर हम देखें तो देयर इज कंट्री दैट इज यूरोप. कॉन्टिनेंट इज यूरोप. एंड यूरोप देयर इज अ कंट्री ब्रिटेन. यहाँ पे भी एक कंट्री कौन सी है? ब्रिटेन. नाउ टेल मी which country at that time was the most progressive country in Europe? सबसे प्रोग्रेसिव कंट्री कौन सी थी? ब्रिटेन. क्लियर? सो ब्रिटेन वाज, read this, Britain was one of the most progressive countries. It was one of the most progressive countries in Europe. यूरोप में प्रोग्रेसिव कंट्रीज में एक सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव कंट्री कौन है? ब्रिटेन. Britain was one of the most progressive country in Europe. Got it? Okay. Now, what we see here, that the majority of in America, about two-third population in America, about two-third population have are immigrants from Britain. They are immigrants from Britain. This concept is very much important. About two-third people are the people who are immigrants from Britain. Clear? And in Britain, the political system is what? Progressive. The political system is more progressive in comparison to other parts of Europe. क्योंकि इस समय यूरोप के दूसरे हिस्सों में क्या था? Monarchical system, absolute monarchy. And in Britain, what was the political system? Britain में political system क्या था? It was constitutional monarchy. And in constitutional monarchy, what will be the structure? King plus parliament. This is the progressive thing. In constitutional monarchy, this is the structure. King plus parliament. It means that the British people are or have adopted parliamentary politics in their political system. This is one of the most important things. So you can write here that British are familiar with the parliamentary politics. Parliamentary politics. Of parliament में the representatives are the representatives of people. It means in Britain, if the people are paying taxes, so there is no taxation without representation. Here in Britain, what is happening? Okay, the people are paying taxes and they are getting representation in the parliament, and this is a progressive. ये एक अच्छी बात कि आप taxes pay कर रहे हो और आपको पार्लियामेंट में क्या हो रहा है? रिप्रेजेंटेशन भी मिल रहा है. So this is what? A representative body. This is what? A representative body. और रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के होने का मतलब ये है कि द पीपल्स एस्पिरेशंस आर रिफ्लेक्टेड इन दैट representative body. The people's aspirations and demands are taken in a positive manner. Got it? The demands that is raised by the people, the government will have a sensitive outlook towards this demand. The government will not suppress that at once. उसके लिए गवर्नमेंट के नजर में क्या होगा? एक सेंसिटिव. जैसे इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो कई बार जैसे देखो गवर्नमेंट किसान से रिलेटेड बिल लेके आई, लोगों ने आंदोलन किया, बिल वापस हो गया. तो पार्लियामेंट में क्या होता है? द गवर्नमेंट इज सेंसिटिव टू द डिमांड ऑफ द पीपल. बट कॉलोनी में क्या होगा? यही बात हमें समझनी है. दिस इज द डिफरेंस हियर. नाउ दिस इज व्हाट द पार्लियामेंट्री सिस्टम. ओके, नाउ टेल मी वन थिंग. दोज पीपल who are living in Britain, they were already familiar with what? Liberal rights.
Those people who were living in Britain, they were already familiar with liberal rights. Those people who were living in Britain, they were already familiar with this modern parliamentary system. People's aspirations are reflected in the parliament. और वही लोग तो भाग के चले गए कहाँ? अमेरिका. 2/3 ऑफ पॉपुलेशन कहाँ है? अमेरिका में. इट मीन्स अगर मेजॉरिटी पॉपुलेशन ब्रिटिश ओरिजिन की है, सो हियर द ब्रिटिश ओरिजिन पीपल आर मोर इनलाइटेड. ये ज्यादा जागरूक है. दे आर मोर इनलाइटेड. दे the level of political awareness is very high. The level of political awareness is very high. They are more enlightened. The level of political awareness is very high. And now, when these 13 colonies will become British colonies, जब ये British colonies बनेंगी, तो British लोगों का expectation क्या होगा? ये होगा कि भाई हमारे तो मजे आ गए. We are British origin people. And this territory is a British colony. So they will thought that it is good. That this area has become what? British colony. They will thought that they are going to enjoy the same political rights that they were earlier enjoying in Britain. उनको लगा कि they will enjoy the same level of economic freedom. They will enjoy the same liberal political rights. They are going to witness the same parliamentary system in America also. But they were confused. Their expectation gone wrong. कॉलोनी का डेफिनेशन ही अलग होता है. ठीक है. कॉलोनी का मतलब होता है ये कि पौधा आपका, गमला आपका, पानी आप दे रहे हो और फल तोड़ के कोई और ले जाएगा. ठीक है, मेरी बात समझ गया ना? ये मतलब होता है कॉलोनी का. दिस इज द मीनिंग ऑफ द कॉलोनी. सो द पीपल आर एक्सपेक्टिंग. ठीक है, कि अच्छा है. ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंस हियर, राइट? When this America becomes British colony, when this colonies became British colony, right? This, okay, big British colony. And now for this British colony, this Britain is parent country or mother nation. ऐसे कई सारे terms कहे जाते हैं. Now after some time, what will be seen here? Right? This discrimination. What will be seen? Colonial discrimination. Colonial discrimination is seen here. Colonial discrimination is seen here. Colonial discrimination is seen. Okay, it means the economy of 13 colonies will be subjugated under the British economy. Okay, it means all economic policies that will be introduced in these 13 colonies, so they will be designed in such a manner that they will fulfill needs of Britain. Got it? It means यहाँ पे क्या होगा? टैक्सेस बढ़ा देंगे. जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज होंगी वो कॉलोनी के लोगों को फेवर नहीं करेंगी. वो किसको फेवर करेंगे? ब्रिटेन को फेवर करेंगे. पॉलिटिकल राइट्स, लोगों के लिबरल राइट्स क्या किए जाएंगे? छीन लिए जाएंगे. नो लिबरल राइट्स विल बी गिवन टू द पीपल. नाउ द ब्रिटिश पीपल रियलाइज कि भाई ये तो खेल अलग हो गया. वी आर ब्रिटिश पीपल, बट इन दिस कॉलोनी द नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इज अनब्रिटिश. यहीं से वो वर्ड आया था कि ब्रिटेन की कॉलोनी है, बट यहां पे जो नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल है, इट्स नॉट लाइक द नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन ब्रिटेन. इट्स व्हाट? अनब्रिटिश. नाउ हियर द पीपल हु आर लिविंग हियर, दे रियलाइज द अनब्रिटिश रूल हियर. अनब्रिटिश रूल. ठीक है, यहां तो अनब्रिटिश रूल, और वो पहले से ही क्या है? दे आर ऑलरेडी पॉलिटिकली अवेयर. सो विल दे अपोज इट और नॉट? यस और नो? यस. देखो, जब आपको पता हो कि आपके राइट्स क्या है, लेवल ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस हाई हो, तो आप अपोज कर दोगे कॉलोनियलिज्म को. इंडिया के केस में प्रॉब्लम क्या थी? पहले क्या था? मोनार्कियल सिस्टम, मुगल एम्परर. तो हमें कहां पता था लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट? हमें पता थोड़ी ना था पार्लियामेंट्री सिस्टम. मुगल रूलर को हटा के अंग्रेज आ गए. अपने को क्या फर्क पड़ता है? ना लिबरल राइट पहले था, ना इंडिविजुअल राइट पहले था, ना इंडिविजुअल राइट अब है. तो लोगों के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस क्या था? कम था इंडिया में. दैट्स व्हाई in India colonial rule established in 1757 और खत्म होने में कब लग गया? 1947. Got it? And in America the year is what? 1775 to 83. मतलब इंडिया में कॉलोनियल रूल एस्टैब्लिश होने के कुछ टाइम बाद ही अमेरिका वालों ने क्या किया?
ठीक है, अपना फ्रीडम इंश्योर कर लिया, एंड अमेरिका वाज द फर्स्ट ब्रिटिश कॉलोनी टू गेन फ्रीडम। अमेरिका ब्रिटिश कॉलोनीज में भी पहली ऐसी कॉलोनीज थी जिसने सबसे पहले आजादी पाई। इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन था वो क्या था? लेवल ऑफ अवेयरनेस ऑफ ब्रिटिश origin people who were living in these colonies was very high. They could successfully identify the difference between British rule in Britain and the British rule in the colonies. They put a blame on the government that this is un-British rule, right? The economy of colony have been subjugated under British economy. The political rights of the people are taken away, and this un-British rule was not accepted to the people of Britain. ठीक है, अगर मान लो ये लोग कम होते तो इंडिपेंडेंस थोड़ा ज्यादा देर से आता, ये डिफरेंस हो जाता। दिस इज वन रीजन, गॉट इट? So have you got this idea? This is one concept. Now I am going to discuss concept number 2. Read this concept number 2. Concept number 2. These are three basic concepts. I will use these concepts while discussing the main topic. This is concept number 1. Read this concept number 2. ये तीनों concepts भूलना नहीं है. These are the most important concepts. देखो, this is the context of 7-year war. Read this context of 7-year war. आगे मैं टॉपिक में ये सारे कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूँ. कॉन्टेक्स्ट ऑफ 7-year war. क्या है ये कॉन्टेक्स्ट? तो you all know that what is the time period of 7-year war. बताओ जल्दी, टाइम पीरियड क्या है? भूल गए? यही तो है, 1756 to 1763. This is the period of 7-year war in Europe. In Europe, and two main participants were Britain and France. Two main participants were Britain and